बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये इंसेक्ट एंड होस्ट का रिलेशनशिप, इसके अंदर आपको बताया था दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन डेफिनेटली इंसेक्ट एस्पेक्ट एंड द अदर वन इज द प्लांट एस्पेक्ट। इंसेक्ट एस्पेक्ट में चार चीज़ें हैं। सबसे अहम फाइंडिंग द जनरल हैबिटेट, फाइंडिंग द होस्ट प्लांट एंड देन एक्सेप्टिंग द प्लांट एज अ प्रॉपर होस्ट, सफिशिएंसी ऑफ द प्लांट एज अ रेक्विजिट। तो ये बेटा जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने मतलब अच्छी तरह कल मैंने डिटेल जो है आपको पढ़ा दी थी। ठीक है ना? तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो, क्योंकि कल जो थे वो डिफरेंट इशू था, आज डिफरेंट इशू है, तो अल्लाह खैर करेगा। बस ये चीज़ें जो ना वो चलती रहनी है। तो फाइंडिंग द जनरल हैबिटेट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इंक्लूड्स द डिफरेंट फिजिकल और एबायोटिक फैक्टर, लाइट, विंड, ग्रेविटी एज वेल एज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वो मैंने आपको बता दिया था कि ये दो चीज़ें जो है वो भी आपने साथ अपने रखनी है। और जो खासकर माइग्रेटरी इंसेक्ट्स हैं सच एज लोकस्ट और अक बटरफ्लाई, तो दे यूज दिस विंड एज वेल एज टेम्परेचर फॉर देयर मूवमेंट। फाइंडिंग जनरल हैबिटेट जो है वो मैंने आपको कल अच्छी तरह डिटेल बता दिया था। इसी तरह एक्सेप्टिंग द प्लांट एज अ प्रॉपर होस्ट वो भी हो चुका है, और सफिशिएंसी ऑफ द प्लांट फॉर अ रेक्विजिट के उसकी बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और जो कि उसकी नॉर्मल ग्रोथ और फैकल्टी को मेंटेन कर सके। नाउ टुडे वी विल स्टडी विद द प्लांट एस्पेक्ट। प्लांट एस्पेक्ट्स इंक्लूड द मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, I already told you that these include the foliage size, shape, color, and presence or absence of glandular secretions, tissue toughness, pubescence. Pubescence का मैंने बताया, these are the hairs, they secrete some toxins, and there are two kind of trichomes, granular trichomes or non-granular. Granular trichomes which actually secrete some toxins, and they are unfavorable for the growth as well as oviposition of the insects. And these actually morphological characteristics will determine the degree of acceptance or utilization of plant by insects. Now the second important characteristic is the physiological characteristics. The physiological characteristics, they play a very important role in the insect and host plant relationship, because they directly involves in the feeding of the insects. And these physiological characteristics include the chemicals which actually produce through metabolic process of the plants. And these, as you know, that there are certain metabolites which are either primary metabolites or the secondary metabolites. Primary metabolites are the metabolites which is directly involved in normal growth, development, reproduction. ये कौन कौन से हो सकते हैं बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। जी सर। कौन कौन से हो सकते हैं? यस सर। बेटा इसमें मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, different enzymes, hormones, and lactic acid, ethanol, these kind of things which are directly involved in the growth and development and reproduction of a plant, they are called primary metabolites. ठीक है ना? And these metabolites are feeding stimulant, nutrients and toxicants. ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं बेटा, ये जो है ये हम इनको कह सकते हैं कि दे आर वर्क एज अ फीडिंग स्टिमुलेंट्स, न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज दे आर टॉक्सिकेंट्स. So keep in mind that the primary metabolites will influence the feeding as well as nutritional availability, and they can be toxicant for the insects. And
The other thing that is the secondary metabolites. Secondary metabolites, actually, what are these ones? They are not directly involved in the growth process, but these secondary metabolites, they have a ecological function or relation function. Some common example are terpenoid, peptides, and growth factors. Actually, the secondary metabolites, they are number of you can say that these are the non-essential metabolites, but they play a very important role in the chemical defense against insects. And what happened actually, the insects usually, I already told you, do the test bites. And for suppose in case of I already told you yesterday that specialist insects such as Protilla zalostella, diamondback moth, or Braviconi brassicae or silkworm moth, they usually do the test bites. And these kind of metabolites act as a token stimuli. So in the test bites, the insects actually get excited with the test bite with the help of these token stimuli. These chemicals which actually do some response in the specialist insects. So these secondary metabolites have a ecological function for feeding of insects. समझ लगी कौन बच्चा आप लोगों को? हाँ. अच्छा. Now, what is semiochemical? Actually, these chemicals which help in the communication between insect and plant is called Semiochemical. Chemicals. Semiochemical. Yeah. The semiochemical are the chemicals, like I already told you that these token stimuli. Token stimuli mean the chemicals which are actually produced through a secondary metabolism, and they elicit a response. So it's mean these chemicals, they help in a communication between insect and plant is called semiochemicals. And there are two kind of semiochemicals. First one is the pheromones, and the second one is the allelochemics. Okay. Allelochemicals. Now, what is pheromones? What is Pheromone. pheromones? Actually, pheromones are the chemicals which help in communication between the member of same species. Pheromones ये जो हम usually use करते हैं, we use usually for the fruit flies. As you know that the fruit flies which are attracted toward the methyl eugenol or Q-lure. These are two kind of pheromones which help in communication between the member of same species. And allelochemicals are the chemicals which help in communication between member of different species. They are these allelochemicals. They are further divided into two further groups: allomones and caramones. So the allelochemics can be the chemicals which are secreted from the plant and insect are attracted toward. So this is the example of allelochemicals. But the example of pheromone mean the chemical which help in communication between member of same species. So the allelochemicals are two kinds: allomones and caramones. Allomones are mostly defensive chemical, and they produce a negative response in insect and reduces chance of contact and utilization. So it means these are the chemicals which have a negative effect on the insect's growth and the production, and insects cannot attract it toward that plant, and they cannot utilize that plant. Pheromones are mostly attractive chemicals and producing positive response in insects, promoting host finding, oviposition, and feeding. So it means pheromones, they are usually attractive chemical, and they produce a positive response in insects. So these are different kind of the chemicals. So in the plant aspect, there are two mainly: primary metabolite and secondary metabolite. They actually influence the insect host plant relationship. Now I will
share with you that the insect host plant relationship. Now we are studying the insect plant interaction factors. समझ लग रही है बेटा आपको? Yes, sir. Before that we studied the insect and host plant relationship. अगर वो क्वेश्चन आ जाता है कि इंसेक्ट आस्पेक्ट या प्लांट आस्पेक्ट के ऊपर insect and host plant relationship लिखें, so then you have to write the insect aspect and the plant aspect. Now if I will ask you write down the different factors that influence the insect plant interaction, then you have to write these plant factor, insect factor and environmental factor. There are three main factors. First one is the plant factor, second one is the insect factor, and third one is the environmental factor. समझ आ गई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और ये आपका बच्चों थ्योरी और प्रैक्टिकल का कोर्स मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, मिक्स चल रहा है, तो इसलिए आपने थ्योरी और प्रैक्टिकल को सेपरेट नहीं करना है. ये आपके थ्योरी में भी पोर्शन जाना है, प्रैक्टिकल में भी जाना है. Okay, So sir. the insect plant interaction factor, starting with the plant factor. I already told you that there are certain physiological and morphological features which help in the insect plant interaction. Starting with the morphological characteristic, the first one is the character of plant covering. Plant covering, usually you can see from your eyes. It involves the color. I already told you, like yellow-green color is very favorable for the whitefly as well as for the aphids. Thickness and toughness, definitely. I already told you, if the leaf is very tough or thick and stem is very hard, then insect cannot feed on it. And then is the hairiness, which is actually trichomes and or a small spines, hairs, which usually what they do, they actually interfere with the insect growth as well as for the oviposition. Then is the waxes. If leaf contains certain wax, then it is very difficult for the insect to feed on that one, and the usually it is difficult for the sucking insect as well as for the chewing insects to chew those leaves if they have wax. Then they have protective cell wall, cell structure, or cell wall is very hard, and so the insect cannot penetrate their mouth part inside, or if they start feeding on that one, it is very hard for the insect to chew those one. Growth vigor, there are as you know that plants, they monopodial and sympodial. Monopodial, they have a single branch. Sympodial, they have a multiple branches. So in plant vigor, that also play very important role during the insect plant interaction. And similarly, growth habit. Certain plants, they are dwarf, or certain plants, they are very tall in their habit. So this characteristic of plant is also very important in the insect plant relationship. Secondary metabolites, I already told you, and pH concentration of a plant is also important. Later on during the during our final course, I will explain you totally how this pH concentration is very important for the insect feeding. Generally, I will tell you only that the BT, as you know, Bacillus thuringiensis toxin, that is important, and in the host plant relationship, it means if the BT is actually a Bacillus thuringiensis bacteria which produce a toxin that is called endotoxin, endodelta toxin. That is a protein which activated at a pH which is alkaline. So it's mean they activate this protein, which is actually toxin for the insects, that activate inside the insect at a alkaline pH. And the alkaline pH mean the alimentary canal of insects, or the digestive system of insect has a alkaline pH. But in case of a plant, do not have alkaline pH. They have a usually neutral or acidic, some kind of pH. So pH concentration plays very important role. Then repair and recovery. Certain plants, they can repair easily their wound, and they can have a
fast recovery, and usually it's occur during the early growth stage of insect of a plant. Later on, this repair and recovery slow down. So, if I will ask you to write down the insect plant interaction factor, then you have to write the plant factor and you have to write these 7 characteristics. Next slide, in which we have to cover the insect factor. पहले कौन से थे? Plant factor, sir. Factors. Now we have to cover the insect factor. Insect factor usually involves the 6 major factors, starting with the degree of attunement or awareness of the senses, which is very important in the finding the host plant or a general habitat. It includes the sight, touch, chemical, and second thing, that is oviposition. As you know that if the insects, they accept certain plant host and then they find particular or the plant with a sufficient nutrients, definitely that will help for their high fecundity. And if the next is the feeding reaction. If the insect, they feed on plants which have specific chemicals inside it or amino acids, they will help in their feeding, and definitely that will increase their oviposition or fecundity of that insect. Then digestion and metabolic activities, that is also very important in insect factor. I already give you the example that in the digestive system, when the Bt toxin enter inside of their digestive system, the toxin is activated and they will attach inside the epithelial layer of the insects, and they will interfere with the metabolic process of the body. As a result, the food is not digested properly, and the insect will start vomiting, and ultimately after a certain time of period they will die. So digestion and metabolic activity, they also involve in the insect factor. Biological races, definitely the insects actually have a number of races, or you can say that there are a specific number of individuals present inside a population. Suppose this is a whitefly, and if we are continuously using certain amount of a pesticide or something, 99.9% insect can be killed, only 0.1% population remains, and that insect or that population is actually a new biotype which will originate after certain time. So that biotype is called also a race. So biological races plays also very important role in the insect plant interaction. Tropistic condition from previous host. It means the there are a number of insects which are polyphagous. They are feeding on number of host plants that also involved in the insect factor. So these are the 6 factors which are major, which play a major role in the insect plant interaction. And last one is the environmental factor. Environmental factor, that is also very important in insect plant interaction. यहाँ तक समझ लगी सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, बेटा sir. ये आज तकरीबन आपके जी, सर। 2-3 लेक्चर और 2 प्रैक्टिकल बीच में कवर हो चुके होंगे अब तक। Okay, sir. यस सर, सर, ऐसे ही है। हाँ जी जी, सर। जी बेटा। जो प्लांट एस्पेक्ट वाला, ये अलग अलग करके प्रैक्टिकल लिखना है, ये एक ही है? बेटा वो इंसेक्ट होस्ट प्लांट रिलेशनशिप है, ये इंसेक्ट के इंसेक्ट प्लांट इंटरेक्शन फैक्टर्स हैं, ये अलग अलग लिखने हैं। फैक्टर्स का अलग है, रिलेशनशिप का अलग है। इसी तरह पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ओके सर। यस सर। हाँ, कंटिन्यू करें या इधर तक काफी आज?
सर काफ़ी है और ये प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और सर पिछली जो टॉलरेंस वाली स्लाइड्स थी वो भी रहती थी, आपने कहा था मैं सेंड करूँगा। टॉलरेंस की स्लाइड नहीं पढ़ाई थी मैंने। नो सर, टॉलरेंस वाली स्लाइड्स जो थी वो आपने सेंड नहीं की थी, आपने कहा था बेटा मैं बाद में कर दूंगा। नहीं, एक मिनट मैं अभी दफा देखता हूँ ना। जी स्क्रीन पे आ रहा है ये आपको? यस अभी तो सर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही आ रहे हैं। एक मिनट बेटा, ये देखना इसके ऊपर एंटीबॉयसिस है, नॉन प्रेफरेंस, टॉलरेंस नहीं था इसमें। चलो मैं भेज देता हूँ। ये टॉलरेंस है ना बेटा, कितना बड़ा तो लिखा हुआ है। सर ये तो वो पीडीएफ है ना, एक आप स्लाइड से भी टॉलरेंस पढ़ा रहे थे। चलो मैं भेज दूंगा, लेकिन ये वैसे तो बुक है जो, उसके मैं आपको स्क्रीन शेयर भी कर दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा। बुक से उसमें ज्यादा पढ़े तो बेहतर होगा। यस सर। सर और जब ये सवाल आएगा फैक्टर्स का तो जस्ट हमने वो लिखना होगा, ये हेडिंग लिखनी होगी या डिस्क्रिप्शन भी देनी होगी, एक्सप्लेन कर भी करना होगा इसको? बेटा जिस तरह पढ़ा रहा हूँ आपने उसी तरह लिखते जाना है। पेपर में बेटा जितना मैंने बोल दिया या पढ़ा दिया है, A to Z सारा पूछता हूँ मैं। ठीक है ना? जी सर। यस सर। हाँ शाबाश। तो किसी को कोई इशू हो तो वो डायरेक्ट टीचर से रब्ता बेटा कर ला करे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी का नेट नहीं आ रहा है या कोई और इशू भी है तो बेटा जो बच्चा क्लास रेगुलर ले रहा है या जिसने इन्फॉर्म कर दिया है तो उनको लहरा हम इंशाल्लाह कंपनसेट करेंगे नंबरों से भी। तो जो बच्चा नहीं आना चाहता या कोशिश नहीं करना चाहता, हम क्या कर सकते हैं, उसकी अपनी वो है हेडेक। तो कल जो है ना, दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जी जी सर कल मैं क्लास ले रहा था, वो नेटवर्क का इशू हो गया तो फिर लीव हो गया, तो फिर दोबारा ज्वाइन की तो अटेंडेंस नहीं लगाई थी, क्लास ली थी। चलो वो ये लगा देती है मारिया। ये मैं लगा दूंगा। नेक्स्ट टाइम बेटा जल्दी आया करो, कोशिश किया करो। ये असल में मुझे भी इधर नेट का इशू आ रहा था, मैं 9:30 से लगा हुआ था तो 10 बज के समथिंग पे ये हुआ है, क्योंकि इधर जिम्बाब्वे की टीम आई हुई है, आपको पता है कि नहीं? वो फिर यस सर। टीम आ जाती है तो हर चीज हो जाती है ऊपर नीचे। यस सर बिल्कुल। तो ये आज तक जितने हमारे प्रैक्टिकल और थ्योरी लेक्चर हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। तो जी सर। अगर आप चाहते हैं कि और मजीद ज्यादा कवर करूं तो फिर ज्यादा भी कर सकता हूँ। नो सर, नहीं सर, इतना काफी है सर मिड के लिए। याद करना है। अभी तो मेरी तरफ नहीं हुआ, मिड अभी चल रहा है, लेकिन ये आपके थ्योरी प्रैक्टिकल इकट्ठे चल रहे होते हैं। ये तो आपने मतलब आपके लिए ये थोड़ा सा आसानी है। इंशाल्लाह सर। थैंक यू। कोरोना वायरस की अफवाह खतरनाक है और ईमान लेवा हो सकती है। चंद तदबीर आपके जिस्म और ईमान की सलामती के लिए ज़रूरी हैं। दिन में 5 बार बाजमात नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में ज़रूर जाएं। पेशावराना और दीगर नामहरमों के साथ मेल जोल में कम से कम 10 फीट का फासला रखें। नामहरमों के साथ हाथ मिलाने, गले मिलने से गुरेज करें। अपनी आँख, मुँह और कानों के गलत इस्तेमाल से परहेज़ करें। बार बार कलमा तजुबा, दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का विर्द करें। तिलावत कुरान और बाकी नेक अमाल की मिकदार बढ़ा दें। अगर आपको कोई अलामात ज़ाहिर हों, मसलन शिर्क, वसवसे और शैतानी ख्यालात, तो तौबा करते हुए जल्दी से अल्लाह की तरफ रुजू करें। शुक्रिया।